Beta, today's topic is types of redox reactions. Last video we had done oxidation and reduction reactions, how we can identify them, and how we can find oxidation number. So in this video we'll discuss redox reactions, how many types are these redox reactions are, and how what changes in the reactions are due to which we find that these are redox reactions. For example, it is combination reaction. You know, combination reaction में दो atoms or elements or compounds आपस में combine करते हैं and they form a new compound. For example, here carbon is reacting with oxygen and forming CO2. Magnesium with nitrogen, magnesium nitride. सो अब आप इसमें देखो कि कार्बन को अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें फाइंड आउट करें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ज़ीरो, ऑक्सीजन विल बी ज़ीरो बिकॉज दीज आर इन स्टैंडर्ड स्टेट्स. एंड हेयर CO2 का ऑक्सीजन -2 एंड इसमें ऑक्सीजन टू एटम्स हैं तो -2 -2 -4 एंड इट इज़ +4. It means carbon oxidation state is changed from 0 to +4 and oxygen is from 0 to -2. So 0 to +4 means loss of electrons and 0 to -2 means gain of electrons. So हमने study किया था कि whether there is loss of electrons, gain of electrons, or we can say if there is change in oxidation state, then it is called redox reaction. So these are combination reactions में इस तरीके से find out करेंगे. Then decomposition reaction. Decomposition reaction, you know, breakdown of a compound. एक compound जो है वो break हो जाता है into two or more compounds or elements or molecules and at least one of which must be in elemental state. इनमें से एक जो है किसी elemental state में होना चाहिए. This is the condition. Now H2O breaks up into H2 and O2. H2 जो है ये molecule of element है, again it is molecule of element. अब इनके oxidation states will be 0 and here hydrogen का +1 होता है, 2 hydrogens हैं तो +2 and oxygen -2. Again change in oxidation state. Same sodium hydride है, again you find that these are 0 and here sodium hydride में because sodium is +1 so hydrogen will be -1. And if there is no change in oxidation number in the entire reaction then it is not a redox reaction. तो अगर हमें identify करना है whether it is a redox reaction or not, then what we will see, there should be change in oxidation number. Now comes for example, see this example, decomposition of calcium carbonate. Now calcium carbonate का बेटा oxidation number check करो. Calcium is +2, carbon oxygen -2 है तो ये -6 -6 +2 प्लस कितना हो जाएगा +4, राइट. तो ये -6 है और यहाँ +2 है तो इसको ज़ीरो न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन का +4 है. तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हेयर कैल्शियम का कितना होगा, ऑक्सीजन -2 देन दिस इज +2. in this oxygen is -2 and carbon is +4. now कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हुआ, +2 to +2 है, कार्बन भी सेम है +4 to यहाँ भी कार्बन +4 है, यहाँ भी कार्बन +4 है, ऑक्सीजन भी -2 है -2 है. तो since there is no change in oxidation state, so this reaction is not a redox reaction. Clear? Now next comes displacement reaction. When an atom or ion is displaced by another atom or ion in a chemical reaction, it is called displacement reaction. ये आपको मालूम ही है कि displacement reaction की definition तो now what we'll see examples. देखो इसमें displacement reaction two types के हैं. एक तो है metal displacement reaction and another is non-metal displacement reaction. So first we'll see what happens in metal displacement reaction. When a metal is displaced by another metal, अगर another metal से displaced होता है in a reaction in the uncombined state, then it is metal displacement reaction. Here copper sulfate है, it is in the combined state and zinc in the uncombined state. तो zinc अगर इसको displace करता है metal को तो it is called metal displacement reaction. ये हमने 10th class में किया हुआ है. The more reactive metal displaces the less reactive metal in its compound form.
when it is in the compound form or in the solution, in aqueous solution. So this is the copper zinc more reactive hai, it will displace copper from copper sulfate solution and it forms copper and zinc sulfate. Now here the what is different, we have to see the oxidation number, change in oxidation state. Now copper is +2, here copper is 0. Sulfur is +6, here sulfur is -6. Oxygen is -2, here oxygen is -2, right? See, this is +2 and this is oxygen is -2 and it will be -8. Sorry, there sulfur will be +6. It should be +6. So here what the change in state, copper की state change हुई है, copper +2 से +0 में आ गया, right? अब now what is this here, titanium chloride. Titanium chloride it is +4 and chlorine -1, magnesium is 0, again titanium +4 से 0 state हो गई and magnesium 0 से +2 हो गया. तो ये change in oxidation state है. So the metal which can easily lose electrons can easily replace the metal from its compound. Means which is the more reactive metal that will displace the less reactive metal, right? Metal वही reactive होता है which can easily give electrons. Now non-metal displacement क्या है? Non-metal displacement means sodium, for example this sodium plus H2O. सोडियम ने किसको रिप्लेस किया है? ऑक्सीजन को, राइट? NaOH प्लस H2 नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया हुआ है. इसमें सोडियम ने हाइड्रोजन, दिस इज H2O, इसमें से मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया H2O को, H2O में से कंबाइन किया NaOH एंड H2, यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, राइट? और कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम OH2 प्लस H2. So less reactive metal reacts with steam. Next is metal जो है less reactive metal वो steam के साथ react करता है. For example magnesium water के साथ जब steam form में होगा then it will react, it forms magnesium hydroxide and plus hydrogen. Iron जो है H2O के साथ react करके iron oxide plus hydrogen, right? Now next is hydrogen displacement from acids. जिंक जो है किसको डिस्प्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम एसिड्स. Zn plus HCl form ZnCl2 plus H2. FeHCl FeCl3 plus H2. MgCl MgCl2 plus H2. इन सब रिएक्शंस में बेटा देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दीज आर ऑल रिडॉक्स रिएक्शन. देखो हाइड्रोजन यहाँ प्लस है, Cl माइनस है, जिंक 0 है, जिंक +2 हो गया एंड हाइड्रोजन 0 हो गया. तो ये दीज आर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इसमें ये क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज मेटल. मेटल के साथ जब हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन जो है बेटा ऐसी स्पीशीज है, इट एक्ट्स एज अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. तो जब व्हेन इट कंबाइंस विद इन द कंपैरिजन टू मेटल, रिएक्टिव मेटल, इट्स एक्ट्स एज अ नॉन मेटल, राइट? So this is sodium displaces hydrogen from H2 and forms NaOH plus H2. So it is called non-metal displacement and that is metal. Above one is metal displacement. Now hydrogen displacement by hydrogen halogen. वो कैसे होगा? देखो इसमें H2O plus F2 gives HF plus O2. Again फ्लोरीन जो हेलोजन्स है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं. यहाँ पे क्लोरीन है, हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लोरीन KBr KCl plus Br2. इसमें क्लोरीन जो है Br को रिप्लेस कर रहा है. मोर रिएक्टिव हेलोजन इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव हेलोजन. तो ये सब टाइप्स के रिएक्शंस हैं जिसमें हमें ये दीज आर ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस. हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें फाइंड आउट करनी है, चेंज देखना है एंड if there is change it is redox reaction, otherwise it is not a redox reaction. Now another is disproportionation reaction. An element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. Means एक element है वो oxidize भी हो रहा है और reduce भी हो रहा है. For example decomposition of H2O2, hydrogen peroxide. Now this hydrogen peroxide it gives H2O plus O2. Here see H is +1, here is H +1. Oxygen is -1, -2 and 0. It means oxygen जो है वो reduce भी हो रहा है और oxidize भी हो रहा है. सेम P4 है, इसमें देखो P4 P is 0, here P is -3 and here P is +1.
Again sulfur के साथ है, sulfur here it is 0, here's -2 and here +2. So these reactions are called disproportionation reaction, where an atom is being oxidized as well as getting oxidized as well as reduced. Now among halogens, as F being most electronegative atom, it can exhibit any positive oxidation state, so it does not show any disproportionation reaction. It cannot exhibit. फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका पॉजिटिव आयन तो बन ही नहीं सकता, सो इट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू ऑक्सीडेशन, हाउ वी कैन बैलेंस these redox reactions. There are two methods, oxidation number method and half reaction method. तो एक एक करके मैं वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगी. And if you have any problem, you can write to me in the comment section. I will explain those problems and make videos regarding it. Okay.